कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं इकबाल और देखने जा रहे हैं शॉर्ट वीडियोस। उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं। जो आपका जो दूसरा सवाल जो था कि इंडिया एंड पाकिस्तान शुड सिट टुगेदर, you know, victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. When you say India is perceived as a big bully, you know, big bullies don't provide $4.5 billion when the neighbors are in trouble. Big bullies don't supply vaccines to other countries when COVID is on, or make exceptions to their own rules to respond to food demands or fuel demands or fertilizer demands because some war in some other part of the world has complicated their lives. The right way. So what's your sharp, short, insightful reaction to the elections in Pakistan? 30 seconds. Does silence count? So, you know this leakage problem? You know what I mean by leakage? Leakage was when 10 rupees left Delhi and only 1 rupee reached. But leakage? Now, I just disclosed many other countries also had a leakage problem. And they actually look to us today, saying, how did you fix it? I mean, I want to say first we fixed it by having a different party in power. So, we are fast. We then fixed it by applying technology also. So immediately after our independence, we experienced aggression. We experienced an effort to change our boundaries, and even today parts of India are occupied by another country. But we did not see the world respond saying, oh, there's a great principle involved and therefore let us all go with India. Today we are being told that there are principles involved. I wish I had seen that principle in play for the last 8 years. I've seen those principles cherry picked when it suits people and not when it doesn't suit people. You know, the UN used to be more relevant in 1950s, 60s. But what happened was, as the number of countries grew, and those 5 who were the self-selected chaudhries of the system, some weeks ago, we stopped issuing visas in Canada. Because it was no longer safe for our diplomats to go to work. As you know, ensuring safety and security of diplomats is the most fundamental aspect of the Vienna Convention. And right now, that is what has in many ways been challenged in Canada. That our people are not safe, our diplomats are not safe. About 5 years ago, I was at that time, actually I had, retired from diplomacy, and I was a well-paid corporate executive, and the Prime Minister told me that he was keen that I join the government. So, frankly, and to me, it was, to me personally, it was a surprise. I had not even thought about it. But one of the reasons I had not thought about it was nobody in my family, then or even now, has even remotely thought about politics. In fact, rest of my family is still wondering what am I doing in politics. इतनी पढ़ाई के बाद आपको क्या लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े डिप्लोमेट कौन थे? मैं कहूँगा सबसे बड़े डिप्लोमेट एक श्री कृष्ण थे, एक हनुमान जी थे। वाह! नहीं, और
बहुत सीरियस उत्तर दे रहा हूँ मैं आपको कि अगर आप उनको कूटनीति के परिप्रेक्ष्य से देखें कि किस सिचुएशन में थे, उनको मिशन क्या दिया गया था, किस तरीके से उन्होंने हैंडल किया था, और हनुमान जी ने तो माने उसके साथ इतना इंटेलिजेंस भी, और मिशन के आगे भी बढ़ गए थे। उन्होंने सीता को फिजिकली वो कांटेक्ट भी किया था, पूरी लंका की खबर ली, लंका को जला भी दिया उसके बाद। Dr. Jaishankar, with the Indian government essentially ignoring war crimes in Ukraine, not condemning Russia, not doing sanctions, but with India counting on global support for in its struggle with China, its issues with China. How do you think you'll be trusted by others after that? Why do you think anyone will help Delhi after losing of others over Ukraine? Thank you. You know, it's an interesting question. Not you, meaning you personally, but people might want to ask themselves, because if I were to take Europe collectively, which has been singularly silent on many things which were happening, for example in Asia, you could ask why would anybody in Asia trust Europe in anything at all? You know, somewhere Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems. But the world's problems are not yours. As a foreign minister of an SCO member state, Mr. Bhutto Zardari was treated accordingly. As a promoter, justifier, and I'm sorry to say spokesperson of a terrorism industry, which is the mainstay of Pakistan, his positions were called out and they were counted. Do we have multiple options? Answer is yes. Is that a problem? Why should it be a problem? If I'm smart enough to have multiple options, you should be admiring them. You know, you shouldn't be criticizing. I can give you many instances of countries who have violated the sovereignty of another country. You know, if I were to ask where Europe stood on a lot of those, I'm afraid I'll get a long silence. Mad liberator, death operator, rock the data, amazing flavor. कुछ देश हैं जिनकी मैं कहूँगा पुरानी आदत है कि दुनिया पे माने अलग देशों पे टिप्पणी करना, दुनिया को ज्ञान देना, पर उनको भी समझना चाहिए कि ये इसका अब समय बीत चुका है। अगर आप दुनिया पे बोलते जाएंगे, कभी ना कभी दुनिया भी जवाब देगी ना। सही बात। ये मैं कहूँगा ऑनेस्टली, यू नो, अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते, I cannot imagine any other government which would have moved in the middle of COVID so many troops with that speed, which he did. How are we going to relink the SAARC countries, or are we moving towards more of a BIMSTEC organization? You know, the big change today in this part of the world is what has happened between India and its neighbors. When you say India is perceived as a big bully, you know, big bullies don't provide $4.5 billion when their neighbors are in trouble. Big bullies don't supply vaccines. I step up to what the West wants. I will step up to what I want. एक नए मूड में आप तो। So just imagine, the reality was, in many cases, you put China's interests ahead of India's interest. I mean, today we are talking India first. Apparently there was a period when it was China first, which I can understand in China, not in India. I am not running a foreign policy for the demands of other countries and other people. I am running a foreign policy for what I think is globally good. And what is in my country's interest. If that doesn't meet every expectation of some Western countries, many Western countries, क्या बात कि यूएन में हमें परमानेंट मेंबरशिप कब मिलेगी? जरूर मिलेगी। जरूर मिलेगी।
पर कुछ भी जो बड़ी चीज़ होती ना बिना मेहनत के कभी मिलती नहीं। ओए होए। तो मेहनत भी करना पड़ेगा। Just like to bring up the tweet by the former finance minister P. Chidambaram, who has referred to the RTI, has said that the role of foreign minister is playing in the hands of RSS and BJP. How would you react to that, sir? If Mr. Chidambaram was unaware that I was member of BJP, that's his problem. I'm a member of BJP. I'm a proud member of BJP. I yesterday made 3 points. Nehru and Indira Gandhi ji gave no importance to Kachatibu. Legal opinion said, please negotiating fishing rights. They disregarded it. DMK was complicit in everything which it does. It was actually party to giving away these rights in 1976. Now, whether it is Mr. Chidambaram or whether it is anything which anybody else wants to ask me, if you wish to dispute these 3 facts, please do so. But there is public document out there. So by saying that today Jaishankar is in BJP or not, well, Jaishankar is in BJP and is proud to be in BJP. Wow. Sherry, Sherry lady, going through emotion. Love is where you find it. Listen to your heart. Sherry, Sherry lady, living in devotion. Who has one great advantage. मेरी पूरी जिंदगी जो है इस मिनिस्ट्री में कर 46 साल आपने लगाए। अब 46 साल however good or bad you are, कुछ तो सीखा होगा ना। So what happens is you have no domain grip. So my problem is actually reverse जो आप क्या कि मुझे अपने आप को याद दिलाना होता है कि भाई अभी आप सेक्रेटरी नहीं हो, प्लीज पुल बैक अ बिट, जो let the professionals do that work and then wait for it to mature and come. Which tried to estimate how much the British took out of India in value terms, and a very calculated math ended up put a number of $45 trillion at today's value. एक बार एक अरब प्रेसिडेंट ने मेरे से पूछा और उन्होंने भी वही शब्द प्रयोग किया। उन्होंने कहा मुझे हमारे यहाँ भी बहुत लीकेज होता है, तो आप कैसे टैकल करते हो? तो मैंने उनको समझाया कि हमारे यहाँ एक तो डिजिटल गवर्नेंस है, वो टेक्नोलॉजी तो हम आपको दे सकते हैं, हमारे यहाँ मोदी जी भी हैं, वो हम आपको दे सकते हैं। The next question is, let me read out this. Our PG student Shubham has said that we need to buy oil from Gulf as India. We are dependent on Russia for weapons, and our largest community is in the USA, and they're fighting among themselves. How do you deal with that? Right? How do you, as a diplomat, deal with that? The clarity of that analysis is astounding. I'd like to recruit that person in the parliament. But joking apart, look, that is what our business is, which is, in a way, you have multiple interests, multiple sources, often contradictory, sometimes conflicting. And how do you actually manage the different accounts and different relationships with the best possible outcome? बिल्कुल यार आज तो एक बहुत कमाल के शाट थे, लेकिन बिल्कुल वो शाट बेस्ट था जहाँ पर एक एंकर पूछ रहा था पाकिस्तान के इलेक्शन के बारे में, तो वहाँ पर उन्होंने ना बहुत एक अच्छा सा जवाब दिया, चुप करके हंस दिया और कुछ नहीं बोला, और लड़की के हाथ से मैक भी गिर गया है। वो सेम हालत इधर है यार, हंस दें और चीज़ें गिरती हैं, ये चीज़ जो है ना उन्होंने एक अच्छा आंसर यार दिया है। एक लड़की है शहर बानो उसका नाम है, ठीक है ना, वो GDA एक पार्टी है, छोटी सी पार्टी, एक आध सीट वो जीती है इधर बलूचिस्तान साइड से या सिंध साइड से, तो उसकी है वो मतलब कैंडिडेट है, तो वो हर दफ़ा इस दफ़ा खैर उस बेचारी को भी हरा दिया है। तो उससे इस तरह के सवाल पूछा था कि आप मतलब ये इलेक्शन ये पीछे कौन चला रहा है, तो उसने बड़ा प्यारा इशारा करके ना मुंह से ही उसने जवाब करके वो बड़ा उसका स्टाइल यार वायरल हुआ था। तो ये सेम टू सेम उन्होंने भी ऐसे ही जवाब दिया कि बस चुप ही रहे, चुप कर एक डॉक्टर एस जयशंकर भाई बहुत बड़े एक डिप्लोमेंट है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी एक लाइफ का आधा हिस्सा इसमें गुजारा है, तो इतना एक तजर्बा और इतना एक्सपीरियंस वो लेकर घूमते हैं। तो भाई एक यही बात होती है, क्योंकि अब जो एक जासूस और डिप्लोमेट में कोई फ़र्क नहीं होता, क्योंकि उनकी हर चीज़ बोलती है, उनकी आंखों के इशारे भी बोलते हैं, उनके मतलब कि एक चुप भी उनकी बोलती है, हर चीज़ उनका एक आगे से बंदा कोई समझने वाला होना तो हर चीज़ समझ जाता है। लेकिन
सबसे बड़ा जो अभी तक जो अभी सूरत हाल रही है ना अभी वर्ल्ड में 2023 और 2022 काफ़ी टफ रहा है एक डिसीजन लेने में। तो इंडिया ने बहुत बड़े बड़े डिसीजन लिए हैं इसमें, जो कि हर कंट्री को एक साइड पर रख कर, ये नहीं कि हर मतलब कि एक होता है आप किसी एक दूसरी कंट्री पर चले जाते हैं और दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं, नेवर। आप उन्होंने हर एक कंट्री को लेकर अपने साथ चले हैं, हर कंट्री को। ये बस ये थोड़ा सा एशिया वाले ये इनमें मतलब कि वो यही बोलते हैं ना कि एक इनको हजम नहीं चीज़ें होती। अब इंडिया सबसे बड़ा इधर एक मतलब इंडिया और चाइना मुल्क है जो कि एक इंडिया के किसी नेबर के साथ अब नहीं बन रही। बांग्लादेश देख लें आप, मतलब कि नेपाल देख लें, एक अफगानिस्तान के साथ ठीक है उनके अच्छे रिलेशन, लेकिन पाकिस्तान देख लें और भी के साथ साथ जो कंट्री हैं साथ वाले कंट्री इन्होंने खुद पंगे क्रिएट किए हुए। इंडिया की तरफ से तो कोई ऐसा स्टेप नहीं हमने देखा आज तक कि इन्होंने खुद किसी मुल्क के लिए लिया। आप देख लो कि एक मालदीव की बात करें या उसके अलावा बांग्लादेश की बात करें, वहाँ पे भी आपको थोड़ी बहुत शायद कैंपेन शुरू हुई है या इस तरह की कोई वीडियो सामने आ जाती हैं। और इसी तरह एक नेपाल के साथ भी ठीक है, बाकी भूटान का भी अभी आपने देख लिया। हाँ, भूटान मतलब ये कि आसपास के कंट्रीज इंडिया की तो श्रीलंका के भी कितना एक जो है ना वो जब मुश्किल हालात इधर से एक अच्छा पैकेज डिप्लोमेट और एक गवर्नमेंट लेवल तक सही चीजें चलती है, लेकिन जो पब्लिक है ना वो पता नहीं क्यों हेट और वो ऐसी चीजें करते हैं, वो नहीं करनी चाहिए। लेकिन यार हमारे जो एक एशियन लोग हैं ना, इनको बहुत ज्यादा जो सुकून आता है या एक खुशी मिलती है ना जब ये एक वेस्ट या अमेरिका को कोई भी हमारा एक बंदा थोड़ा सा टारगेट कह ले या उसको थोड़ा सा जो है ना वो जवाब देता है या उसको थोड़ा सा एक आंखें दिखाना, तो वो मतलब ना वही बंदा जो है ना वो बहादुर मानते हैं। तो ये चीज़ उनमें है। देखो ना कंट्री किसी के साथ जो है ना वो रिलेशन ख़त्म नहीं करने चाहिए। हाँ, आप अगर अपने कदमों पे हैं या अपने पाँव पे खड़े हैं तो आप उनके साथ उस हिसाब से जो है ना वो डील करें जिस तरह वो एक थिंकिंग रखते हैं। तो ये कम अज़ कम जो है ना वो उनमें एक खूबी है। और वो देख लो कि आज एक बहुत एक अच्छे नहीं वो अच्छा शार्ट था जो एक अरब ने बोला था ना कि हमें टेक्नोलॉजी हर चीज़ चाहिए, लेकिन आगे से सही जवाब दिया कि हर चीज़ मिलेगी, लेकिन हमारे पास पीएम मोदी जी भी हैं, वो हम आपको कभी नहीं दे सकते। तो वो देने वाले बंदे भी नहीं है यार। एक मतलब कि सही है, लेकिन किस अरब ने पूछा होगा? दुबई नहीं पूछा होगा या सऊदीया? दुबई या सऊदीया, इनके या नई नई चीज़ें आ रही है। बाकी बेस्ट शार्ट्स थे, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएंगे। अगर पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।